New question. Arun Limited Company submitted the following information. Number one is fixed cost 2 lakh, then unit sold 60,000, marginal cost 5 rupees per unit. The selling price is fixed, charging 20% profit on selling price, not on total cost, on selling price. That is the main important point. Find out BEP in rupees, BEP in units, PVR. What will be the profit if sales is 10% more than the break-even point? It means अगर आपका सेल ब्रेक इवन पॉइंट से 10% ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? यानी इसका मतलब इसका डिज़ायर सेल है कि मेरा जो सेल होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट से 10% मोर. तो आइए पहले देखते हैं. पहले तो अपन ये देखें कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करें, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट. तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, तो फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख प्लस मार्जिनल कॉस्ट 60,000 into 5, that is 3 lakh. Total cost is equal to 5 lakh, that is total cost, and plus profit 20% on selling price. Total cost plus profit is equal to selling price. Selling price unknown. और जिस पर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, किस पर बोल रहा है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस. जिस पर बोला जाता है वो ऑलवेज भी 100%. प्रॉफिट तो 20% है, तो यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा? 80. प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पर बोला है, उसके ऊपर 20% है, दैट इज 100% होगा, तभी तो उसके ऊपर 20% बोल रहा है. तो अब यह तो अननोन है, तो ये 100, प्रॉफिट 20, इट मीन्स टोटल कॉस्ट 80%. Now 80% is equal to 5 lakh. Then 20% is equal to, so find out 80% is equal to 5 lakh and 20% is equal to X. अपने को 20% का अमाउंट फाइंड आउट करना है. जो फाइंड आउट करना होता है वो इक्वेशन में लास्ट में रखेंगे. अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट को अपन लास्ट में रखेंगे. तो 80% है 5 लाख, तो 20% कितना? 20% का अमाउंट फाइंड आउट करना है. इसके लिए अमाउंट को हमने इक्वेशन में लास्ट में रखा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 into 5 lakh divided by 80, because x is equal to 80x is equal to 20 into 5 lakh. Then 20 into 5 lakh divided by 80, तो x is equal to 20 का 20 में 1 टाइम, 80 में 4 टाइम, 4 का 4 में 1 टाइम, 5 lakh में 1,25,000. It means x is equal to 1,25,000 और x means 20% की वैल्यू. तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1,25,000. टोटल इज 6,25,000. नाउ s per unit is equal to total amount of sales divided by unit sold. टोटल अमाउंट ऑफ सेल इज इक्वल टू 6,25,000 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड कितने हैं? 60,000. देयरफॉर यूज द कैलकुलेटर. 6,25,000 डिवाइडेड बाय 60,000, इट मीन्स 10.42 अप्रॉक्स 10.4, 10.416666, it means 10.4. Now this is a total cost. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया 3 लाख, सब आ गया. अब अपने को फाइंड आउट करना है बीईपी इन रुपीज. वी कैलकुलेट हियर बीईपी इन रुपीज. फॉर्मूला विल बी f divided by 1 minus v upon s. f is equal to how much? 2 lakh. 1 minus v is equal to 5 per unit. v per unit लेंगे तो s भी per unit लेंगे, कितना है? 10.42. But it is approx, not accurate.
Therefore, we take here amount 3 lakh. So the BP is accurate 3 lakh. Now selling price 6 lakh 25,000. So 2 lakh 6 lakh 25 into 1 6 lakh 25, so 3 lakh 25,000 divided by 6 lakh 25,000. 330 cancel. 2 lakh into 625 divided by 325. Again use the calculator. 2 lakh into 625 divided by 325. Amount is 3,84,615. 3,84,615.38. That is BP in rupees. Next, BP in units. So we can find out BP in units. BP in units. F divided by C per unit. C per unit is equal to S per unit minus V per unit. So S per unit is equal to 10.42 minus V per unit is equal to 5. V per unit is equal to 5. The answer will be 5.42. So F is equal to how much F? 2 lakh. 2 lakh divided by 5.42. So BP in units is equal to 2 lakh divided by 5.42. So 36,900 units approx. Because 36,900.36. Therefore, we here write approx. Then PVR. What is the formula of PVR? C upon S into 100. C is equal to 5.42. S 10.42 into 100. Again. $5.42 52%. 52.01, it means 52%. Now, what will be the profit if sales is 10% more than the BP? This is a BP, 3,84,615.38. Now, profit is equal to न्यू कैपिटल C माइनस F. इनके अपने को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो पहले तो निकालना है न्यू कंट्रीब्यूशन. तो न्यू कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो फार्मूला है, पहले इसको अपन रफ कर देते हैं ताकि फिर इजी हो जाएगा. व्हाट विल बी द प्रॉफिट सेल्स 10% मोर देन द बीपी. इसका मतलब है कि बीपी से 10% ज़्यादा सेल चाहिए. तो पहले तो देखें आपका डिजायर्ड सेल कितना है. तो 10% मोर देन द बीपी. तो बीपी कितना है? 3,84,615.38. प्लस 10%, यानी जितना बीपी है उससे 10% ज़्यादा. तो उससे 10% ज़्यादा यानी कितना आएगा? 38,461.53. तो अब यहाँ पर आएगा
4,967,032, यानी उसका डिजायर सेल जो है 4,23,076.91. Now new contribution is equal to new C is equal to desired sale in bracket 1 minus V upon S. desired sale कितना है उसका 4,23,076.91 in bracket 1 minus V. V means variable cost था 3 लाख जो अपन ने फाइंड आउट किया था 5 into 60,000 और 6,25,000 था आपका S. तो 4,23,076.91 in bracket 6,25,000 into 1 6,25,000 minus 3 lakh, तो 3,25,000 divided by 6,25,000, 330 cancel. Now answer will be new contribution. 4,23,076.91 multiplied by 325 divided by 625. Answer will be 22,19,999.99. It means 2,20,000. Approx 2,20,000. Now new contribution is equal to 2,22,000 minus fixed cost is equal to 2 lakh, तो आंसर विल बी 20,000. यानी प्रॉफिट कितना रहा 20,000. अगर आप जितना ब्रेक इवन पॉइंट निकला उससे अगर आप 10% अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा वो 20,000 का मिलेगा. Now next question. From the following information, find out BEP in rupees and tons. New BEP if selling price increased by 20%. New BEP if variable cost decreased by 20%. Fixed cost will be constant at rupees 3,000. That is given data. Variable cost fluctuate from 0 to 3,000 rupees. Selling price per ton rupees 450. Production and sales 20 tons. Now find out. First, what is the selling price and total cost? S minus V is equal to C minus F is equal to P. What is the selling price? 20 tons at the rate of 450. It means 9,000. What is the variable cost? Fluctuated at the most 3,000. It means variable cost 3,000. Contribution is equal to 6,000. Fixed cost 3,000. Profit 3,000. What is the per unit? 20 tons. Variable cost per ton कितना रहेगा? 3,000. V per unit is equal to total variable cost divided by unit sold. So total variable cost how much? 3,000. Variable unit sold कितना है? Tons sold, sorry. Tons sold. Production and sales 20 tons divided by 20. It means 0 cancel. That is 150 tons. So per unit 150 rupees per unit. So 20 into 150. This is the V per unit. What is the requirement? BEP in rupees. Break even point in rupees. Formula will be F divided by 1 minus or C upon S. Simple. C upon S. So F is equal to 3,000. C
C is equal to 6,000 divided by S is equal to 9,000. 3 3 0 cancel. 3 का 6 में 2 टाइम, 9 में 3 टाइम, तो 3000 into 3 divided by 2. It means 3 3s are 9. 9,000 divided by 2, it means 4,500 rupees. That is BP in rupees. Now BP in units. BP in units. Formula will be F divided by C per unit. C per unit is equal to S per unit minus V per unit. S per unit is equal to 450 minus V per unit 150. It means 300. Therefore, F fixed cost how much? 3,000 divided by 300 is equal to 10 units. This is the answer. 3,000 divided by 300 is equal to 10 units. Now, new BP if selling price increased by 20%. New BP, it means new BP in rupees. New BP if selling price increased by 20%. Therefore, formula will be F divided by C1 minus V upon S. New BP if selling price increased by, so selling price is equal to 450 increased by 20%, that is 90. Now 540. Therefore, F is equal to 3,000. 1 minus V यानी वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3,000. S sorry V per unit how much 150 divided by S कितना है 540. 3,000 0 0 cancel. 54 into 154 minus 15, it means 39 divided by 54. So 3,000 into 54 divided by 39. So answer will be 3,000 into 54 divided by 39. That is 4,153.85. This is the answer. Now similar question, but there is decrease variable cost by 20%. What will be the BP? Same formula, only here is B selling price increase, here variable cost decrease. Formula remains same. Variable cost is equal to V is equal to 150 plus decrease by 20%. 20% means 30. It means 120. Now F fixed cost is equal to 3,000. 1 minus B 120. 450. 3,000 0 0 cancel. 45 into 1 45. 45 minus 12 33 divided by 45. 3,000 into 45 divided by 33. Formula applicable किए, कैलकुलेटर यूज करेंगे. 3,000 multiplied by 45 divided by 33. 4090.91. 4090.91
0.91. This is our answer. All fours are calculated. First is BP in rupees and tons, then BP. If selling price increased by 20%, now variable cost, new BP. If variable cost decreased by 20%, then answer will be this. Thank you.